हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट होम्योपैथी मेडिसिन डल्कामारा के क्लिनिकल इंडिकेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत उपयोगी होने वाली है, इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर रूपल माहेश्वरी, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों यह जो मेडिसिन डल्कामारा है वह बीटर स्वीट के नाम से जानी जाती है। यह इसका कॉमन नेम है और यह सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करती है। तो ये मेडिसिन इंडिकेटेड होती है एंड ऑफ द समर सीजन एंड स्टार्टिंग ऑफ रेनी सीजन व्हेन नाइट्स आर कोल्ड एंड days are hot. So also there is catarrhal rheumatism and skin eruption which are brought on aggravated by cold, damp, rainy weather, and there is also rheumatism alternate with diarrhea, and there is profuse coryza and profuse secretion of mucous membrane. Patients have to use many napkins and which is developed after exposure to damp basement or aggravated by taking cold in rainy season or damp weather. And also there is diarrhea after getting cold, and patient has burning thirst for cold water, and there is white tongue. There is dropsy after suppressed sweat and suppressed skin eruptions. So also there is headache with coryza, body pains, and patient is very irritable, restless, and sad, and also there is confusion of thoughts, cannot find the right word for anything. So also there is warts which is large, smooth, fleshy on neck, hands, face, or back of the hands and fingers. Skin is very delicate, sensitive or liable to skin eruptions, which is aggravated by taking cold and damp, rainy weather. And skin eruption develops every time patient takes cold or long exposed in cold. Also, there is urticaria all over the body, which is aggravated by warmth and amelioration from cold. This is the most characteristic modality in urticaria for Dulcamara patients. And also there is rash before the menses, and no fever during urticaria, and patient itching, burning after scratching. There is thick yellow brown crust on skin, forehead, temples, etc., with reddish borders, bleeding when scratching, suppression of urine after drenching in rain. So all the symptoms of this medicine aggravate in cold in general, cold, damp weather, and exposure to cold in for long time, and after suppression of skin eruptions, sweat, and menses, and amelioration is from moving about. So these are all the clinical indications of homeopathy medicine Dulcamara. सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो में दी गई जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो दोस्तों इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस भी आपको समय पर मिल सके और यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक सभी को सादर नमस्ते, धन्यवाद।